Hello everyone. Today we are going to the solving the problem of SAT 2023. Okay. Hmm. कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे. ओके, दिस इज आईएमपी क्वेश्चंस. ओके, तो इसमें देखिए कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए हैं. कल हमने देखा था कि व्हाट इज द फोटॉन रिलेशंस. ओके, कल ये रिलेशन देखे थे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स. ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3. और क्वेश्चन भी सेम वही देखा था. ओके, which means questions the temperature of t of a black body enclosed are doubled, means the temperature is doubled, then the total number of photon inside the enclosed increase by factor. वही क्वेश्चंस कल देखा था. Simple, t is increased by how much times? 2 times, means n is directly proportional to 2t, bracket is 2 3, means this is a suppose initial one. Okay, n1, this is a n2. Then what is the ratios? n1 upon n2 is equal to how much? T to the power 3 upon 8 t to the power 3. Yes or no? T to the power 3, t to the power 3 get cancelled. That's how many number of photons increase by. Means we can take the n1 upon n2 is equal to how much? 1 by 8. Means n2 is equal to 8 times of n1. Means number of times, number of 8 times of initial photons increase by after increasing the 2 times of temperature. Yes or no? Means if temperature is doubled, number of photon is increased by 8 times. Okay, ये क्वेश्चन हमने कल ही देखा था. Okay, next सेम वही क्वेश्चन भी देखा था. The Helmholtz free energy of the function is defined by. कल हमने टोटल 4 इक्वेशंस देखे थे. Which one? dq is equal to du plus dw. First one, first law. Second one, एंथैल्पी भी देखा था हमने. H is equal to u plus pv. Next देखा था F is equal to u minus Ts. F is equal to how much? U minus Ts. This is the direct answers. Okay, which one is correct then? Simply Helmholtz free energy F is equal to u minus Ts. मतलब option number which one is correct? Option number 2 is correct. U minus Ts, U plus Ts, U plus Pv. But U plus Pv is nothing but enthalpy. Yes or no? Means U minus Ts is correct. कल ही देखा था वही questions. Next, yesterday we can see the this one question also. और मैंने देखा था, मैंने बोला भी था कि हमने 9 एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो उसमें 4 एप्सिलॉन नॉट भी आ सकते हैं. तो सेम वही उन्होंने पूछा कि 4 एप्सिलॉन नॉट. ऐसा ना कल बातें करते करते हमने देखा था कि दे आर समटाइम द 4 एप्सिलॉन नॉट. यस और नो? तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सी हियर, देखिए दे आर गिवन द एनर्जीज एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन एंड 3 एप्सिलॉन. हम कंसीडर करते हैं कि वी कैन प्लेसिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल. सपोज मान के चलिए कि n1 नंबर ऑफ पार्टिकल प्लेस इन 0 एनर्जी. ओके, n2 number of particle placed in epsilon naught energy. Okay, n3 number of particle placed in 2 epsilon energy, and n4 number of particle placed in 3 epsilon energy is equal to how much? कितना चाहिए हमें? 4 epsilon naught चाहिए. Yes or no? Means n1 number of particle placed in 0 energy, n2 or okay, n2 number of particle placed in epsilon energy, n3 number of particle placed in 2 epsilon naught energy, and n4 number of particle placed in 3 epsilon naught energy is equal to how much? कितनी चाहिए हमें? तो उन्होंने 4 epsilon naught इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. ऐसा ना? तो n1 into 0 0, n2 into epsilon plus n3 into 2 epsilon plus 3 into n4 एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन. ओके, तो हमने क्या करना है? तो एप्सिलॉन 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 गेट कैंसिल हो जाएगा. मतलब ये लिख द सिंपल रिलेशन n2 प्लस 2n3 प्लस 3n4 इज इक्वल टू हाउ मच? 4. ऐसा ना? अरे समझ में, मतलब दिस एडिशन इज इक्वल टू हमें कितनी चाहिए? तो 4 चाहिए. क्लियर? और उन्होंने कितने पार्टिकल्स गिवन है? देखिए कि दे आर गिवन how many particles? They are given the 3 indistinguishable particles. They are given how many indistinguishable particles? 3 indistinguishable particles has total energy is 4 epsilon naught. Energy कितनी होनी चाहिए? 4 epsilon naught.
स्टेट विद एनर्जी 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन और 3 एप्सिलॉन। मतलब उन्होंने बोला कि कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आ जाएंगे कि दे आर गिवन द एनर्जी इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नाउ सी हियर, हमें ट्रायल और एरर बेसिस पे देखना है कि दिस एडिशन मस्ट बी 4। यस, दिस एडिशन मस्ट बी 4। तो देखिए हमारे पास कितने पार्टिकल्स है? 3 पार्टिकल्स है। हमें टोटल एनर्जी कितनी चाहिए? 4 चाहिए। ओके, और एक एनर्जी लेवल ऐसी है कि 0 है, उसमें कितने भी पार्टिकल प्लेस करिए उसमें कुछ भी एडिशन में चेंज नहीं होगा। क्लियर? नाउ सी हियर, हियर इज अ 3 पार्टिकल। सपोज मैंने क्या कर दिया कि वी कैन प्लेस द 3 particles, sorry, 2 particle, ओके, 2 पार्टिकल मैंने क्या कर दिया, तो 2 एनर्जी है, 2 में रख दिया, तो दिस बिकम 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल इज 2, 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। मतलब एडिशन इज इक्वल टू 4 आएगा। मतलब हमारे पास जो 2 पार्टिकल्स है, विच वन 2 पार्टिकल्स, बाकी जो 2 पार्टिकल्स, टोटल उन्होंने कितने पार्टिकल्स दे दिए? तो 3 पार्टिकल्स दे दिए। यस और नो? तो 3 पार्टिकल्स में हमें एक तो पार्टिकल रख दिया, 2 पार्टिकल तो रखे, कहाँ रखे? तो दिस एनर्जी लेवल्स में। हमारे पास जो एक पार्टिकल बचा है वो पार्टिकल हम कहाँ रखेंगे? दिस पार्टिकल प्लेस इन n1 into 0 एनर्जी लेवल्स। यस और नो? मतलब एक पार्टिकल प्लेस इन दिस एनर्जी लेवल्स। ओके, मींस टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? दिस आर 2 plus 1 is equal to how much? 3। मींस which combination is allowed now? तो फर्स्ट पार्टिकल, ओके, लाइक दैट 1, नेक्स्ट सेकंड में कोई पार्टिकल हम प्लेस नहीं कर रहे तो 0, नेक्स्ट हाउ मेनी पार्टिकल इन नेक्स्ट स्टेट? 2 में रखा है हमने 2 पार्टिकल्स और 3 में कोई पार्टिकल्स नहीं रखा, तो 1 माइक्रो स्टेट इज 1020। अरे समझ में? 1020 मतलब 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन और 3 एप्सिलॉन। ये हम जब एडिशंस करेंगे तो वी गेटिंग दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 4 एप्सिलॉन नॉट। वन कॉम्बिनेशंस। ओके, सेकंड कॉम्बिनेशंस देखिए, तो वी कैन प्लेस one particle is here and one particle is here. Okay, one particle here means 1 plus 3 into 1 3. Clear? One particle here, here is one particle, 3 into 1, 3 into 1 3, 3 plus 1 4. Okay, and हमारे पास जो और एक बच गया वो पार्टिकल, वो कहाँ रखेंगे हम? यहाँ रखेंगे, जीरो स्टेट में। मतलब this energy, suppose, okay, one particle in zero state, next one particle in epsilon energy state, next 0 particle in 2 epsilon state, and 1 particle in 3 epsilon। मतलब simple addition, 1 into 0 0, 1 into epsilon epsilon, 3 into epsilon 3, 1 into 3 epsilon 3 epsilon। मतलब 3 plus 1 4, 2 into 2 4। Clear? This is the second combinations। Okay, and any other possibilities there? Yes, 3 plus 1 4। ओके, और कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो जिसकी एडिशन हमारे पास कितने आएगी? 4 आएगी। यस और नो? तो हम एक काम कर सकते हैं, और कौन सा काम कर सकते हैं? तो 2 पार्टिकल n2 में रखिए, तो वी कैन प्लेस द 2 पार्टिकल इज हियर एंड 1 पार्टिकल इज हियर, 0 0 हियर। ओके, तो दिस एडिशन बिकम 2 into 1 2 plus 2 4। So this combination also possible. Total number of particle become 4, means 0 2 1 0। Total number of particle is 4 3, 2 into epsilon 2 epsilon, 1 into 2 epsilon 2 epsilon, 2 epsilon plus 2 epsilon 4 epsilon। Yes, any other possibility is there? No, और कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें होगी नहीं। जनरली देखिए तो ट्रायल एरर बेसिस पे हम कर सकते हैं। मान के चलिए अगेन 3 पार्टिकल प्लेसिंग हियर, दिस बिकम 9 एप्सिलॉन। 3 पार्टिकल यहाँ हमने प्लेस कर दिए तो दिस बिकम 6 एप्सिलॉन नॉट। 3 पार्टिकल यहाँ प्लेस कर दिए तो 3 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। ओके, इज लाइक दैट। हम ट्रायल एरर बेसिस से वो सॉल्व करेंगे तो गेटिंग मैक्सिमम हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 3 कॉम्बिनेशंस, मींस वी गेटिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स? 3 नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। दिस आर नो means which of the following option is correct? A system of 3 indistinguishable particles has total energy 4 epsilon naught. Therefore, there are 4 in a single particle energy state, 0 epsilon 2 epsilon 3 epsilon. The number of microstate, accessible microstate is equal to how much? 3. Which 3 accessible microstates? So 1 0 2 0, next 1 1 0 1, and next 0 2 1 0. Clear? Next. Number of proton increased by how much? 10 times.
नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा है कि कंसीडर अ आइडियल फर्मी गैस has three dimension. The density of state epsilon is proportional to. Simple. Density of state का फॉर्मूला क्या होता है? Direct we can solve this one. Density of state G of E d G of E d is directly proportional to, or rho of E. We can take that directly. Rho of E is directly proportional to epsilon to the power d by s minus 1. d by s minus 1. हम एक क्लासिकल देख रहे हैं, yes or no, नॉन रिलेटिविस्टिक. तो इसमें एनर्जी कितनी होती है? E is equal to p square upon 2m. p square upon 2m means h cross square k square upon 2m. Okay. Here, which power is important? K power is important. Okay. Means what is the k to the power? Means energy is directly proportional to k to the power. Yes. A part हमें important है. Yes or no? Means energy directly proportional to k to the power s. Power of k. Power of k is nothing but yes. This is non-relativistic case. E is equal to h cross square k square upon 2m. Means what is the value? Compare करें. तो what is the value of s? S is equal to 2. Okay. And उन्होंने पूछा है कि this is for 1D, 2D, 3D. The consider Fermi gas in 3 dimension. उन्होंने बोला कि 3 dimension के लिए क्या रहेगा? तो 3 dimension D is equal to D indicates the dimensions 3. Clear? So just to write down these values, epsilon to the power D by s. D by s means dimension is 3, s is equal to 2 minus 1. 3 by 2 minus 1 means this is directly proportional to epsilon to the power 1 by 2. Means which option is correct? E to the power plus 1 by 2 is correct. Consider a Fermi gas in 3 dimension. Fermi gas, classical. Okay. The density of state epsilon is directly proportional to epsilon to the power plus 1 by 2. Okay. Because potential energy is 0, total energy is nothing but kinetic energy is equal to p square by 2m, epsilon to the power 1 by 2. Clear? Suppose system is there given, suppose 1D. So 1D then dimension is 1. 1 by 2 minus 1 means we getting answer is, which one is correct? Answer B is correct. Okay. Suppose they are given for 2D. So this become 2 upon 2, 1. 1 minus 1, 0. Means which option is correct? Epsilon naught is correct. Means for 2D, epsilon naught is correct. For 1D, minus 1 by 2 is correct. For 3D, plus 1 by 2 is correct. Clear? Next. ये भी क्वेश्चन हमने एक आई थिंक रेगुलर लेक्चर में देखा है. E is equal to minus j s1 s2. Okay, this is this question SSP questions. Okay, here they are given the s value is equal to how much? Plus 1 plus minus 1 plus minus 1. They are given the 2 spin. Okay, they are given the 2 spin s1 s2. तो possible combinations क्या हो जाएगी? Plus 1 for up like that, minus 1 for down. Okay, तो पहली possibility देंगे both are up. Okay, plus indicate that plus, plus indicate that up, minus indicate that down. Clear? So second one up, first one up, second one up down, next down up, next down down. Okay, to write down the energy, possible energies. What is the first energy? First energy E1 is equal to minus j. What is the general formula? E is equal to minus j s1 s2. Minus j s1 s2. Now what is the s1 s2? Both are up, means both are plus plus, means energy E1 is equal to plus 1 into plus 1 is plus 1 minus j. Okay, next E2. E2 is equal to how much? Plus 1 minus 1. Plus 1 into minus 1 is minus 1, and this minus become minus into minus plus. Clear? Next, minus 1 plus 1. Minus 1 into plus 1 is minus 1. Minus into minus plus means E3 is equal to plus j. Okay, next. Both are down. Both are down means both are minus minus means E4 is equal to minus j. Okay, and minus 1 into minus 1 minus 1. Minus 1 into plus 1 minus 1. Okay, means here we are getting the how many energy levels? 4 energy levels. Then what is the partition function? Partition function is equal to summation over s e to the power minus beta es. Okay, suppose function is not a energy or non-degenerate case, then partition function is equal to this one. Suppose partition energies are degenerate, then summation over s gs e to the power minus beta es. Yes or no?
Here we are getting the degeneracies. Which degeneracies? These two energy levels are same. These two energy levels are same. For this case, degeneracy is equal to 2. For this case, degeneracy is equal to how much? 2. Yes or no? Means these are degenerate case. Then what is the partition function? Like that. Z1 e to the power minus beta E1 plus Z2 e to the power minus beta E2. Clear? Then this is equal to how much? What is the degeneracy for first energy? 2 e to the power, suppose beta j. We can take the minus, suppose. Minus into minus become plus. Plus 2 times e to the power minus beta j. E to the power minus beta j. Means we are getting this partition function. But they ask what is the value of U? U means average energy is equal to how much? What is the formula? Minus daba upon daba beta ln z. Daba upon daba beta minus ln z is equal to how much? Minus daba upon daba beta ln z is equal to how much? 2 e to the power beta j plus 2 e to the power minus beta j. Yes or no? E to the power plus beta j plus e to the power minus 2 beta j. एक प्लस क्यों आ रहा है? बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है. जनरल क्या होता है? e टू द पावर माइनस बीटा एस होता है. ओके, देन फाइंड आउट दिस डेरिवेटिव. व्हाट इज दिस डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ln x डेरिवेटिव इज 1 by x 2 e to the power beta j plus e to the 2 e to the power minus beta j. एक बार सेम टाइप का क्वेश्चन नेट में भी पूछा है उन्होंने. नेक्स्ट, टेक द डेरिवेटिव. 2 e to the power beta j derivative is how much? 2j e to the power beta j. Yes or no? With respect to beta ले रहे हैं हम. Beta j derivative is a j only. Minus 2j और बाहर वाला minus as it is. Okay. Beta j e to the power minus beta j. Okay. Now we can take the approximation. X is a very small. X is very small. Then what is the approximation? E to the power x is equal to 1 plus x and e to the power minus x is equal to 1 minus x. ये दो approximation हम यहाँ use करेंगे. Okay, and to get cancel numerator to denominator to get cancel. J also we can take common out. J हम common लेते हैं minus j. Okay, then what is this one? E to the power beta j. मतलब what is the value of x? X is nothing but beta j means 1 plus beta j. ओके, सेकंड वन 2 कैंसिल हो रहा है, जे भी हम बाहर निकाल रहे हैं, तो दिस बिकम माइनस 1 माइनस बीटा जे, 1 माइनस बीटा जे अपॉन दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस बीटा जे प्लस 1 माइनस बीटा जे. ओके, प्लस बीटा जे माइनस बीटा जे गेट कैंसिल. ओके, न्यूमरेटर में क्या होगा? दिस इज प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस बिकम प्लस. मतलब इन दिस केस व्हिच पार्ट गेट कैंसिल? 1 get cancel, not beta j get cancel because outside is minus sign. Okay, so 1 plus 1 minus 1 get cancel, minus minus become plus, means u is equal to minus j. Okay, and this become 2 beta j upon 2. Okay, this 2 get cancel, j into j, j square, and this is equal to how much? Minus beta j square, minus beta j square. And they ask average energy of the system varies as C by kT. C is constant, okay, and they are given what is the value of C? Sorry, C by kBT. C by kBT. Okay, तो U is equal to क्या है हमारे पास? तो U is equal to S minus J square upon B is nothing but KT. KT means write down the kBT. Okay, now comparing with this one. They ask the what is the value of C? C upon kBT. C upon kBT means what is the value of C? What is the value of C? C upon kBT बोला है उन्होंने. मतलब what is the value of C? C is nothing but minus j square. C is nothing but minus j square. And so which option is correct? Option number A is correct because S1 S2 have the taking the plus 1 minus 1 value. We can choose the possible orientations. Then we getting minus j square is correct one. Next, here these questions. The ratio of frequency of first line of Lyman series and first line of Balmer series. First line of Lyman series and first line of Balmer series. Okay.
first line of Lyman series and first line of Balmer series. First line of Lyman series and first line of Balmer series. Okay, what is the 1 upon lambda is equal to क्या होता है RH. RH 1 upon NF square minus 1 upon NI square. ओके बाल्मर के लिए ni और nf की वैल्यू होती है सॉरी लाइमन के लिए लाइमन सीरीज ni 2 होती है nf 1 होती है यस और नो तो देखिए वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू देन वी गेटिंग 1 अपॉन lambda l is equal to rh okay 1 upon nf square means 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square means 4 4 minus 1 3 3 upon 4 into 4 1 and this is equal to how much 3 rh upon 4 okay means what is the lambda l then lambda l is equal to reverse of this one 3 rh okay this is the wavelength of Lyman series and what is the wavelength of Balmer series 1 upon lambda b is equal to rh 1 upon इसमें बाल्मर में क्या होता है कि बाल्मर सीरीज ni is equal to 3 nf is equal to 2 ni is equal to 3 nf is equal to 2 then 1 upon 4 square minus 1 upon 9 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square okay then 9 minus 4 9 minus 4 5 upon 36 and this is equal to how much 5 rh upon 36 this is the value of Balmer okay then what is the wavelength of Balmer is equal to take the inverse of this one 36 upon 5 RH 36 upon 5 RH और उन्होंने क्या पूछा है कि what is the ratio of Lyman upon Balmer तो take the just a ratio of this one lambda L upon lambda B lambda L upon lambda B lambda L 5 RH upon 36 divided by sorry 5 lambda L 4 upon 3 RH divided by 36 upon 5 RH okay this can be written as 4 upon 3 RH into 5 RH upon 36 okay 4 9 okay 9 into 3 27 means RH get cancel 5 upon 27 means the ratio of lambda L upon lambda B is equal to how much 5 upon 27 which option is correct okay 5 upon 27 no any option in this case 5 upon 27 and then एक थोड़ा सा दिलं की 27 upon 5 ये थोड़ा सा तर करेक्शन करणं गरजेचं आहे लक्षात येतं तो ऑप्शन सी करेक्ट यायला पाहिजे पण त्यांनी दिले तिथं 27 upon 5 आणि आपला आन्सर जे येते 5 by 27 लक्षात आलं 5 by 27 नेक्स्ट see here D1 and D2 lines of sodium D1 and D2 lines of sodium हा जनरल क्वेश्चन्स आहे D1 and D2 lines of sodium see here sodium atom sodium P cell splitted into two parts which two parts 2p 3 by 2 and 2p 1 by 2 2p 3 by 2 and 2p 1 by 2 पहले देखा था हमने ये स्प्लिटिंग बस वेवलेंथ देखा था D1 to D1 line and this is the D2 lines okay D1 line D2 lines which wavelength is larger this wavelength is larger as compared to this one because energy is smaller wavelength is larger हमने देखा था कल 58 I think 5890 or 5896 yes or no see here this is a D1 and D2 lines but here good quantum number is J here good quantum number is J मतलब कौन सा पार्ट स्प्लिट होगा J वैल्यू विल बी स्प्लिटेड फर्स्ट D1 लाइन देखेंगे हम तो D1 is good quantum number is J here good quantum number is J मतलब which value is splitted J value is splitted J is equal to how much J is equal to 1 by 2 then Mj is equal to minus 1 by 2 and
प्लस 1/2, माइनस 1/2 एंड प्लस 1/2. सी हियर एंड सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा एम जे इज इक्वल टू 0, प्लस और माइनस 1, 0, प्लस और माइनस 1. देखिए तो प्लस हाफ माइनस हाफ, जे कैसे स्प्लिट हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस 1. सिमिलरली यस के लिए भी दिस कैन बी रिटन एज यस जे 1/2 माइनस 1/2. अरे समझ में. तो हमें डिफरेंस जीरो चाहिए, तो डिफरेंस जीरो कैसे होगा, सेम टू सेम ट्रांजिशन. सेम टू सेम ट्रांजिशन मीन्स same to same transition means 1/2 to 1/2 transition and minus 1/2 to plus 1/2 means here delta mj difference is equal to how much, 0 आ रहा है. ठीक है समझ में, मतलब दिस इज अ सिलेक्शन रूल. एंड सेकंड वन, हमें डिफरेंस जो है तो प्लस 1 चाहिए. तो प्लस 1 कैसे मिल सकता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, डिफरेंस हमें क्या चाहिए, तो प्लस 1 चाहिए. तो कैसे भी लीजिए, तो दिस इज कंसीडर्ड एज इनिशियल, दिस कंसीडर्ड एज अ फाइनल. मतलब ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस सपोज minus plus 1/2 to minus 1/2, but taking like that, this is final, this is a initial. 1/2 plus minus of minus become कितना आएगा, प्लस 1 आएगा. yes or no, हम ऐसे लेंगे, सपोज मान के चलेंगे दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल. तो फाइनल क्या है, माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2 बिकम माइनस 1. yes or no, कोई भी एक सीक्वेंस प्रॉपर्ली आप याद रखिए. नेक्स्ट हमें कितना चाहिए, माइनस 1 हो गया, अभी प्लस 1 चाहिए. तो प्लस 1 कैसे हो जाएगा, here is a final is plus 1/2, minus is minus 1/2, minus minus कितना हो जाएगा, final minus of minus initial, and this is a transition also possible. difference is how much, plus 1. मतलब difference 0 आ रहा है, difference minus 1 आ रहा है, difference plus 1 आ रहा है. means we getting how many lines, means here we getting how many lines, 4 lines. for which cell D1 transition we getting how many lines, 4 lines. अरे समझ में. second transition, in this case which one is good quantum number, in this case J is good quantum number, 3/2 is good quantum number. Then 3/2 is split into how many parts? This 3/2 is split into 4 parts. Yes. This is plus 3/2. Okay. Next, plus 1/2. Next, minus 1/2, and next minus 3/2. Again, same the selection rule. Delta mj is equal to 0, plus or minus 1. Okay. Next. Lower, which one is good quantum number, S is good quantum number, J is good quantum number. This is a plus 1/2 and minus 1/2, plus 1/2 and minus 1/2. transition will be same to same, difference getting 0, difference getting 0. मतलब same to same transition लेंगे हम पहले. same to same is 1/2 to 1/2 first transition, and the second is minus 1/2 to minus 1/2. here difference कितना आएगा, difference mj is equal to 0. क्लियर. नेक्स्ट हमें डिफरेंस कितना चाहिए, तो माइनस 1 चाहिए. तो माइनस 1 कब आएगा, देखिए तो माइनस 1/2 टू प्लस 1/2, सॉरी माइनस 1/2 ट्रांजिशन बिकम 0. ओके. नेक्स्ट माइनस 1/2 माइनस 3/2, तो माइनस 3 एंड तो नहीं पॉसिबल होगा. क्यों, क्योंकि माइनस 1/2 और माइनस 3/2 यहाँ से ट्रांजिशन होगा 3/2 टू माइनस 1/2, देन माइनस 1/2 माइनस 3/2, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा. माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो डिफरेंस इज प्लस 2 आएगा. मतलब दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड. नेक्स्ट 1/2 टू माइनस 1/2, देखिए 1/2 टू माइनस 1/2, दिस इज माइनस 1/2, ये बनेगा माइनस 1/2, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1. ओके, दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल. ओके. नेक्स्ट हमें डिफरेंस कितना चाहिए, तो माइनस 1. तो 3/2 टू माइनस 1/2 इज नॉट पॉसिबल, but we can choose the 3/2 to plus 1/2. difference देखिए, तो 1/2 minus 3/2, मतलब half minus 3/2 is minus 1. मतलब this transition is allowed. मतलब this difference is equal to how much, delta mj is equal to -1. ये जो दो ट्रांजिशंस रहेंगे इसके लिए हमारे पास डिफरेंस रहेगा -1. ये जो दो ट्रांजिशंस रहेंगे इसके लिए डिफरेंस रहेगा 0. और अभी हम डिफरेंस कितना चाहिए हमें, डिफरेंस इज +1. तो +1 कब मिल सकता है, देखिए -1. हाँ, तो -1/2 to +1/2 ट्रांजिशन देखिए, दिस इज प्लस हाफ एंड दिस इज माइनस हाफ, बट वी कैन टेक द माइनस ऑफ माइनस, दिस बिकम प्लस. ओके, 1/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/2. नेक्स्ट -3/2 to प्लस -1/2, देखिए दिस इज -1/2, और ये माइनस माइनस बिकेम बनेगा प्लस, मतलब -1/2 प्लस 3/2, डिफरेंस इज +1. दिस आल्सो पॉसिबल. फॉर दिस टू ट्रांजिशन के लिए डेल्टा mj कितने होगा,
plus 1. Means here we are getting how many lines is possible? 2, 2, 2. Means total number of lines 6 for D2, for 4 for D1. Okay. Means sodium. D1 and D2 lines present in the sodiums. Okay. D1 lines 4, D2 lines 6. Alright, answer. D1 4, D2 6. Next questions. कल ही हमने एक क्वेश्चन देखा था e of k is equal to e naught minus 2 beta cos k x a plus cos k y a plus cos k z a. बस हमने क्या किया था, बस 1D के लिए देखा था. मतलब here we can take the e naught minus 2 beta minus 2 e naught minus 2 beta cos k x a. और हमने बोला था कि ग्राउंड स्टेट मतलब लोअर वैल्यू और बॉटम के लिए k x k y k z वैल्यू क्या होती है, तो 0 0 होती है. और टॉप के लिए क्या होती है, तो पाई बाई ए कुमा पाई बाई कुमा पाई बाई. और सिंपल के लिए BCC 0 0 0 2 pi by a comma 2 pi by a comma 2 pi by a. Okay. Next. तो EU 3 plus ion, EU 3 plus ion, EU 3 plus ion, EU 3 plus ion. Okay. What is the configurations? Configuration is 4F6, 4F6, next 5S2, 5P6, 5S2, 5P6. ओके. मैक्सिमम ये सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं. यहाँ 2 ही प्रेजेंट है, मतलब दिस इज कंप्लीटली पेड. नेक्स्ट 5P6, मतलब P सेल में मैक्सिमम 6 होने चाहिए, तो मैक्सिमम 6 है. मतलब दिस इज लाइक दैट इनर्ट, दिस बिहेव लाइक अ इनर्ट. मतलब which one is unpaired? इनकम्प्लीट कौन सी सेल है? तो इनकम्प्लीट सेल तो हमारे पास 4F6. जनरली क्या होता है कि लाइक दैट दे राइट डाउन द 5S2 5P6 नेक्स्ट 4F6 ऐसे कुछ लिख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये बन जाएगा क्योंकि आप देखेंगे ये तो कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसा ना. तो डोंट वरी अबाउट दिस वन, बस देखिए कि जो अनपेयर्ड है इस पे फोकस करिए. ओके. In this case, which one is unpaired or incomplete? Incomplete is 4F6. Okay? मतलब ये में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. F सेल में मैक्सिमम कितने होते हैं? F सेल में मैक्सिमम होते हैं लाइक S P D F 2 4, इसमें सॉरी 4 ऐड करिए, 2 plus 4 6, 6 plus 4 10, 10 plus 4 14. मतलब मैक्सिमम होते हैं 14. मैक्सिमम 14 होते हैं तो 7 बॉक्सेस करिए. मैक्सिमम कैन प्लेस कितने के प्लेस करते हैं हम? 2 प्लेस करते हैं. ये सब. तो देखिए, सो 1 2 3 4 5 ओके एंड 6 7 6 7. तो L वैल्यू प्लेस करिए. तो L वैल्यू क्या होती है? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. ओके. और हर एक बॉक्स के लिए S वैल्यू कितनी होती है? 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2. आ रहा है समझ में? नेक्स्ट. अब देखिए कि हमें प्लेस करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करना है? तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है. तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6. ओके. तो अब देखिए, तो हाउ टू फाइंड आउट द L वैल्यू? तो L वैल्यू इज नथिंग बट क्या होता है? समेशन और ml होता है. समेशन और ml. तो समेशन और ml बनेगा -3 नेक्स्ट -2 -1 +0 +1 +2 +2. तो ये क्यों ले रहे हैं हम? बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अप टू +2. यस और नो? 3 क्यों नहीं ले रहे हम? बिकॉज इट इज नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, राइट डाउन द 0 हियर. नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, राइट डाउन हियर इज अ 0. क्लियर? देखिए हियर इज अ +1 -1 means this +1 -1 get cancel. Here is a +2 -2 get cancel. With this difference, this addition is equal to how much? 3. मतलब what is the value of L for this case? L is equal to how much? 3. L is equal to how much? 3. Clear? Next, what is the value of S? तो S देखिए, तो S is equal to, take the additions, 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus how many? 1 2 3 4 5
6. Okay, up to taking up to 6 only because there is no electron is present. 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Take the addition of all. Half plus half. How many times? 6 times. 6 times is 6 into 1 by 2 is equal to how much? 3 only. Clear? Means S is equal to 3. L is equal to 3. S is equal to 3. L is equal to 3. Okay. Then what is the value of J? J is equal to L minus S to L plus S. Okay. L minus S to L plus S. L minus S. 3 minus 3 to 3 plus 3. 3 minus 3 0. 3 plus 3 6. मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Means we getting how many J values? 0 to 6. Okay. But in this case, how to find out the which one is ground state? So using the Hund's rule. What is the Hund's rule? Less than half filled, lower J value is ground state. More than half filled, higher J value is ground state. Okay. तो आप देखिए कि less than half filled मतलब less than 7 electron is less than half filled. More than 7 electron is more than half filled. अभी तो हमारे पास 6 electrons हैं, मतलब this number is less than 7. This number is less than 7 means this is a less than half filled. Less than half filled, lower J value is a ground state. आ रहा है समझ में? इसमें 8 electrons होते हैं, 9 electrons होते हैं, तो we can write down the 6 is a ground state spec J value. Okay. L is equal to how much? 3. L is equal to 3 मतलब which cell? L is equal to 3 means EF cell. S is equal to 3 means what is the spectra multiplicity? 2s plus 1 मतलब 2 into 3 6 plus 1 7 multiplicity 7. How to write down the spectroscopic term? 2s plus 1 Lj. Yes or no? 2s plus 1 Lj. 2s plus 1 7. L is equal to 3 means EF cell. Okay. और J कौन सा लिखना है हमें? 0 to 6 कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन focus on Hund's rule, less than half filled or more than half filled. This is a less than half filled. Less than half filled मतलब lower J value is ground state. मतलब 7F0 is ground states. Okay. Here 7 ये तो हो नहीं सकता. S 8SF 7 by 2 और 6H 15 by 2 because L is equal to हमारे पास कितना आ रहा है? L is equal to 3 वैल्यू आ रहा है. तो 3 वैल्यू के लिए तो ये दोनों पॉसिबल है नहीं, तो बस ये दो पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये फिर ओके. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है देखिए, तो वहां भी 7 लिखा है, वहां भी 7 लिखा है. बस प्रॉब्लम ये आ रहा है 0 लिखना है या 6 लिखना है. 0 लिखना है या 6 लिखना है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे. Here number of electrons is less than 8. Number of electrons is less than 8. Sorry, less than 7. Less than 7. Less than 7. Lower J value is ground state. इसलिए 7F0 is ground state आएगी. अरे समझ में? 70. Next. The Cork structures of baryon cascade 0. S is equal to how much? -2. Cascade 0. Okay. S is equal to how much? -2. हमने तो चार्ट देखा है. Yes, cascade 0, proton, neutrons. This chart, okay. Here, proton, here, neutron, here, sigma 0, sigma plus, sorry, sigma minus, or sigma minus, sigma 0, sigma plus. Next, cascade 0, cascade minus. Okay. Here S value 0, here S value -1. Here S value is equal to how much? -2. मतलब इस ग्रुप का ये पार्टिकल है. हमने क्या किया था? We can place the 2UU. Okay. Next DDD. Next yes. और पहले के लिए रूल यूज किया था मेजॉन के लिए सीधा अपोजिट राइट डाउन इट्स एंटी पार्टिकल. और सेकंड में क्या रूल देखा था? सी अपोजिट राइट डाउन इट मिसिंग. सी अपोजिट राइट डाउन इट मिसिंग. क्या दिख रहा है? डी. डी का मिसिंग क्या है? यस है, तो यू एस. सी अपोजिट यस दिख रहा है, तो इसका मिसिंग क्या है? तो डी है. डी डी. सी अपोजिट क्या दिख रहा है? यस. यस का मिसिंग यू. सी अपोजिट क्या दिख रहा है? यू दिख रहा है. यू का मिसिंग यस. यस. सी अपोजिट क्या दिख रहा है? यू. यू का मिसिंग डी. यस. सी अपोजिट क्या दिख रहा है? डी. डी का मिसिंग यू. तो वी गेटिंग एस डी. Sorry, SS C opposite and write down it's missing. Okay, D. 1 minute. तो हमें चार्ज कितना होना चाहिए? तो चार्ज तो 0 होना चाहिए.
चार माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री एस एस डी। ओके, एस एस डी, तो दो एस आने ही चाहिए, दो एस आ गए तभी तो हमारे पास जो वैल्यू जो रहेगी, विच वैल्यूज, सॉरी सी पॉजिटिव मिसिंग, तो मीन्स यू एस एस, कैस्केड जीरो। ओके, हाँ, यू यू, ओके, तो कैस्केड जीरो के लिए हमारे पास दो ईयर्स तो आने चाहिए कंपल्सरी। ओके, सॉरी, थोड़ा मिसिंग हो गया, हमने लिखते टाइम थोड़ा सा गलत कर दिया था। ओके, तो यहाँ ज्यादा नेगेटिव रहेगा इन दिस केस, कैस्केड जीरो और कैस्केड माइनस में विच वन इज मोर नेगेटिव, तो कैस्केड माइनस इज मोर नेगेटिव, तो उसे लेफ्ट लिखिए। विच वन इज मोर पॉजिटिव, कैस्केड जीरो इज मोर पॉजिटिव। अरे समझ में अभी करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट डी डी एस एस, सी अपोजिट क्या दिख रहा है, यू, यू का मिसिंग डी, सी अपोजिट क्या दिख रहा है, डी, डी का मिसिंग यू। अब देखिए ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। इस स्ट्रक्चर में दो एस आ रहे हैं, तो एक एस के लिए वैल्यू, एस वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, दूसरे के लिए माइनस वन, तो नेट एस इज इक्वल टू माइनस टू। नेक्स्ट चार्ज जीरो आ रहा है, देखिए एस का चार्ज होता है माइनस वन बाई थ्री, एस का चार्ज माइनस वन बाई थ्री, और यू का चार्ज होता है टू बाई थ्री, मतलब the charge become minus 1 by 3 minus 1 by 3 means minus 2 by 3 and plus 2 by 3 get cancelled and this become cascade zero, is charge is zero, मतलब this structure will be satisfied. And what is the cork structure, SSU, ये तो क्वेश्चन गलत होने का चांस होना ही नहीं चाहिए, तो UU SS, this will be correct one. Okay, next. हमने ये भी क्वेश्चंस लिया था स्ट्रक्चर में, पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन वीक इंटरैक्शंस। पैरिटी का भी टोटल चार्ट लिया था, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्शन, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चंस नहीं दिख रहे। पहले हम बस स्टेप फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद वन बाय स्टेप बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, हाँ, ये देखिए क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। ओके, देखिए दिस इज हाउ मच, दिस इज ए, तो आगे जाते समय दिस इज नॉर गेट, ये सब ना और गेट, और ये जो है और गेट में जब डायरेक्ट एडिशंस होती है तो बी का है, दिस इज नॉट गेट, तो बी बन जाएगा यहाँ बी बार, और दोनों का एडिशन बनेगा ए प्लस बी बार, यस सर नो, दिस इज द आउटपुट ऑफ और गेट, और ये जो है तो एंड गेट है, तो ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन रहेगा बी इंटू सी बी सी। ओके, मतलब फर्स्ट आउटपुट क्या आ रहा है, बी सी, सेकेंड वाला। ओके, और नेक्स्ट क्या बन जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, ये समझ, दो जो इनपुट्स रहेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, ए प्लस बी बार इंटू बी सी, ये समझ, बी बार इंटू बी सी, इसे मल्टीप्लाई करिए अंदर, ए बी सी प्लस सॉरी बी बार इंटू बी सी, बट मान के चले कि इनपुट हमने b इज इक्वल टू 1 दिया, तो b बार कितना होगा, b बार इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इज इक्वल टू हमने 0 दे दिया, तो b बार क्या होगा, 1 होगा, जैसा ना, मतलब दिस इज अ रिवर्स वन,
तो सपोज दिस वैल्यू इज +1, दिस बिकम 0 हो जाएगी, 0 है तो ये 1 हो जाएगी, ये सर मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 0 होगा, ये सर मतलब दिस पार्ट बिकम a into a bar is equal to how much, 0. We can use this property, this part getting 0, simply which part will be survive, a b c, total is nothing but a b c. Clear? Next. In scattering theory, spherical symmetric potential, the particle in z axis are represented by, okay, मतलब जब तो पार्टिकल पर हमारे वेव जो है इंसिडेंट नहीं होती तब तो इसका नेचर जो होता है e टू द पावर i के r होता है, ओके, और इसके बाद इंसिडेंट होने के बाद स्कैटर्ड जो वेव होती है उसका जो नेचर होता है, दिस नेचर इज a e टू द पावर, और कांस्टेंट कभी कभी लेंगे, नहीं लेंगे कोई जरूरत नहीं, तो e टू द पावर i के r अपॉन r होता है, I k r upon e to the power I k r upon r. Okay, this is a scattering wave and this is an incident wave. Okay, this is incident wave. मतलब उन्होंने दोनों भी waves दिए, incident as well as scattering. Incident e to the power I k r, scattering e to the power I k r upon r. तो which option is correct? तो उन्होंने बोला कि the scattering theory, the spherically symmetric potential, the incident particle on z axis, मतलब इंसिडेंट वेव पूछी, तो व्हाट इज द इंसिडेंट वेव, e to the power I k z, just the z is taking here, and what is the scattering, e to the power I k z, e to the power I k z, yeah, wave coming from z axis, इसलिए we can take here z is notations, we consider this is the z axis, incoming wave is this one, e to the power I k z, after incident here, then scatter this wave e to the power I k z upon r. Okay, this is scattering wave nature, this is the incident wave nature. The option number e to the power I k z is correct one. Okay, ये जो प्रॉब्लम्स है हमें सॉल्व करने पड़ेंगे टोटली. नेक्स्ट, a बार b बार कोमा b बार कोमा a बार, सी है a बार कोमा b बार, a bar comma b bar, okay, inner product, and next b bar comma a bar. तो ये हमें सॉल्व करना है. तो we know that commutator a comma b क्या होता है, commutator a comma b is equal to ab minus ba होता है, yes or no, ab minus ba. Similarly here we can use this trick, then this become ab minus ba, don't take the bar here, no problems, minus comma ba minus AB हो जाएगा, yes or no? Next, simplify this one. Here we are getting how many brackets? 4 brackets. This with this one, this with this one. Similarly, this with this one, this with this one. We are getting 4 brackets. AB, comma BA. First one. Second one. Here is a plus sign. Here is minus sign. मतलब minus sign is taking outside. AB, comma AB. Next. Here is minus sign, here is a plus sign. Minus sign we can take common out. Minus into plus become, okay, minus into plus. This is minus, this is plus. Here multiplication होता है. Minus into plus, minus. Okay. BA comma BA. Okay. Or next, here is a minus, here also minus. Minus into minus, plus. BA comma AB. BA comma AB. Okay. Now see here. AB comma BA. Like that, a comma b, ab minus ba. Similarly here also we can use these tricks, ab ba. Okay, and the second one become ba plus minus ba ab हो जाएगा, yes or no, ab ba, and the second one ba ab. Next, this commutator is equal to 0. Why? Because commutator itself, like that, a comma a is equal to how much? 0. Clear? Next, similarly here also ba comma ba, this also 0 because commutator itself. Next, ba comma ab, तो ये बन जाएगा ba ab. Okay, first one, और second one बनेगा minus a b BA. Yes or no? B.
अब देखिए ए बी बी ए प्लस माइनस गेट कैंसिल. नेक्स्ट B A A B same gate cancel. This commutator relation is equal to how much? Simply 0. This commutator relation is equal to how much? Simply 0. Next, consider an anisotropic two-dimensional oscillator given by the Hamiltonian. This is given by the Hamiltonian. Okay. What is the energy? This is a 2D case. 2D case. What is the Hamiltonian? Kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy P square upon 2m or Px square upon 2m plus Py square upon 2m plus 1 half Kx square plus 1 half Ky square. Okay. Now this system is unperturbed system. This system is unperturbed system. और ये जो unperturbed system है, ये unperturbed system के लिए energy क्या होती है? This can be written as nx plus 1 by 2 h cross omega or omega x plus ny plus 1 by 2 h cross omega y. Okay, or omega simply. This is for unperturbed case. Means whatever the frequency along x directions, same as along the y directions. Clear? Now, but here system is disturbed, perturbed. H is equal to s px square upon 2m plus py square upon 2m plus 1 by 2 kx square. और हम इसे सिंप्लीफाई कर दे. Okay, this plus this is nothing but this one, and this plus this is nothing but ny plus 1 by 2 h cross omega. Then this can be written as 1 half kx square. Clear? Plus second one 1 by 2 or p y square plus उन्होंने क्या दिया है? They are given simply 2 times m omega square y square. तो ये जो 2 times है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, because always write on the kinetic energy and potential energy is half here. Okay, so we can adjust here 1 by 2. तो ये बन जाएगा 4 times omega into y square. 4 times, sorry, k y square. 4 times k y square. But k is nothing but m omega square. K is nothing but m omega square. जो 4 है तो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? वहाँ एडजस्ट करेंगे 2 omega square y square. Okay? Or here we can write on the m omega square 1 by 2 m omega square. Clear? What is this energy? Acceptation of this energy, acceptation of Hamiltonian is nothing but energy. So we can find out the acceptation of this value is nothing but nx plus 1 by 2 into h cross omega. Okay, because here omega square is replaced by omega plus here ny plus what is the omega here? Omega is nothing but 2 omega, means 1 by 2 into h cross into 2 omega. Okay, means this energy is equal to how much? nx plus ये 2 multiply करिए अंदर, this become 2 ny plus 1 plus 2 get cancel, means here is getting the 1 plus 1 by 2, this become 3 by 2 bracket complete h cross omega, because this omega will be same. Now we are getting the general form is this one. General form is this one. Now system is 2D, then nx ny starting from in LHO 0 0 0 0 energy getting 0 0 3 by 2 h cross omega 3 by 2 h cross omega. Next 1 0 1 0 1 plus 0 plus 3 by 2 means 2 into 1 2 2 plus 1 3 means we are getting 5 by 2 h cross omega. Next 0 1, okay, 0 1, then 2 plus 3 by 2, 2 into 2 4, 4 plus 3 7 by 2 h cross omega. Next 2 0, also we are getting the 7 by 2 h cross omega. Next 0 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 plus 2 8 plus 3 11. तो इसके अलग देखिए कोई और ऑप्शंस आ रहे हैं, तो we can choose the 1 1 1 1, then 1 plus 2 3 3 into 2 6 6 plus 3 9 by 2 h cross omega. अब देखिए हमारी ये सीक्वेंस आ रही है 3 by 2 3 by 2 5 by 2 7 by 2 9 by 2. अब ऑप्शन चेक करिए कि कौन सा ऑप्शंस है जो हमें ये सीक्वेंस देता है. We can choose the n is equal to 0, we are getting 3 by 2 h cross omega, first options. Next, we can choose the n is equal to 1. The n is equal to 1, then 3 plus 1, 3 by 2 plus 1, we are getting the 5 by 2 h cross omega. Are I saying?
Yes, next is 5 by 2 h cross omega. Next, we can choose the 2. 2 into 2, 4. 4 plus 3. Sorry, 2, yes. 2 into 2, 4. 4 plus 3, 7. 7 by 2, h cross omega. Yes, alright. Next, 3. 3 into 2, 6. 6 plus 3, 9 by 2, h cross omega. अब पीछे नीचे वाले देखिए, कहीं भी आप वैल्यू पुट करिए तो ये दो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, बिकॉज हियर इज अ कितना आ रहा है हमारा 3 by 2 आ रहा है, मतलब हाफ इज देयर। ये कोई भी दोनों भी ऑप्शन में हाफ है ही नहीं, मतलब दिस टू ऑप्शन इज आर नॉट करेक्ट। फोकस ऑन दिस वन। अब जीरो लिया तो वी गेटिंग द 2 by 3, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 3 by 2, मतलब ये मैच नहीं हो रहा है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो थोड़ा सा लाइक अ ट्रायल एरर बेसिस हमें चूज करना पड़ेगा। n plus 3 by 2 h cross omega is correct one. Clear? This is equal to how much? 0. Clear? Next, a square a n plus 1. A square sorry, a plus a n plus 1. जनरल क्या होता है कि a ऑपरेट ऑन एनी स्टेट, a ऑपरेट ऑन एनी स्टेट, state write down as it is and state decrease by 1. Okay, this is the basic properties. Next, a dagger operate on any state. What happens? State increase by 1. Here we getting n plus 1 and state increase by how much? 1. Clear? लेकिन उन्होंने देते टाइम ही क्या किया उन्होंने कि स्टेट इंक्रीज ही दिया है, जनरल एन स्टेट नहीं दिया, उन्होंने n plus 1 दिया है। आ रहा है समझ में? तो a ऑपरेट ऑन दिस वन, a ऑपरेट ऑन दिस वन, a ऑपरेट ऑन दिस वन, क्या हो रहा है? जो भी केट में था वो रूट में आ गया। यस सर? सिमिलरली a इस पे ऑपरेट करेंगे, जो भी हमारे केट में है वो रूट में आएगा, मतलब हियर वी गेटिंग रूट n plus 1 और इसके बाद स्टेट डिक्रीज बाय 1 होगी। ये सब पहले रूट में आ गया जो भी था, इसके बाद स्टेट डिक्रीज बाय 1 हो गई। सिमिलरली हियर आल्सो a ऑपरेट ऑन दिस वन, वी गेटिंग रूट n plus 1 a डैगर, और इसके बाद स्टेट जो है वो डिक्रीज होगी। यस और नो? रूट n plus 1 स्टेट डिक्रीज बाय 1। नेक्स्ट, a डैगर ऑपरेट ऑन n, फिर क्या हो जाएगा? a डैगर ऑपरेट ऑन दिस वन, वी गेटिंग स्टेट इंक्रीज बाय 1 एंड हियर आल्सो स्टेट इंक्रीज बाय 1। रूट n plus 1 या कितना n है? n था, क्या आ गया था हमारा? रूट n plus 1, रूट n plus 1 और इसके बाद स्टेट इंक्रीज क्या होगी? n plus 1। ओके, रूट n plus 1, रूट n plus 1, मतलब सिंपली n plus 1 into n plus 1, that's it। रूट n plus 1 into kate n plus 1, which of the following option is correct? n plus 1 into kate n plus 1, that's it। Next, for uniformly solid sphere of radius r, which of the following statement is correct about the magnitude of electric field at a distance r? कल ही वही भी क्वेश्चंस देखा था, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड inside this is the solid sphere, here is the uniformly charge distributed, uniformly charge distributed। we know that using the Gauss law, E bar dot ds bar is equal to q enclosed upon epsilon naught, q enclosed upon epsilon naught। okay, now this is a uniformly charge distributed, means rho is constant here, rho is constant। what is the LHS? This is spherical, then E into 4 pi r square, A into 4 pi r square। system is solid sphere, means this system is 3D case, 3D case, then q is equal rho is equal to how much? q upon p होता है, okay, और rho is equal to dq upon dv, yes or no? means q is equal to how much? integration rho into dv, yes or no? q is equal to rho into dv, rho into d tau। system is solid sphere, solid sphere, what is the volume? volume is equal to 1 by epsilon naught, volume is, rho is constant, constant take outside, or we can take the rho naught is here, into, yes, this is equal to r square dr into sin theta d theta into d pi। okay, this integration value is equal to how much? 4 pi, we can take 4 pi is outside, means 4 pi rho naught upon epsilon naught, okay, into r square integration r to the power 3 upon 3। लिमिट क्या लेना है? 0 टू स्मॉल r लेना है, 0 टू कैपिटल R लेना है। दे आस्क इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी मींस इनर वन। हमने देखा कि इनसाइड द बॉडी पॉइंट लिमिट और गॉसियन लिमिट, आउटसाइड द बॉडी बॉडी लिमिट। ये इनसाइड द बॉडी है तो गॉसियन लिमिट, गॉसियन लिमिट क्या होता है? 0 टू स्मॉल r, मतलब 0 टू स्मॉल r, 0 to small r means no change at all here। what is this left side? E into 4 pi r square, 4 pi get cancel, 1 r square get cancel, means E is equal to rho r upon 3 epsilon naught, means inside
E is directly proportional to R. कब तक? जब तक हम बाउंड्री नहीं क्रॉस करते. तो what is the boundary? Here. ये जो small r है, this is less than capital R. This is less than capital R. Electric field is directly proportional to R. Outside the, suppose here they are given, suppose small r is greater than capital R. At that time, electric field will become 1 upon R square. Means which option is correct? Uniformly charged solid sphere of radius capital R. Which of the following statement is correct one? तो E is equal to 0 नहीं हो सकता because this one is not a conducting system. ये conducting system होती तो electric field is 0. R is less than capital R. Is non-zero and constant for R is less than R. तो constant नहीं आ रहे. देखिए, this is directly proportional to R आ रहे. मतलब R is changing, electric field also changing. मतलब this option also not correct. And E is directly is proportional to R. Is proportional to R. Yes, this one is correct. ये तो directly proportional ही आ रहा है ना? Directly proportional to 1 by R. And this is the inverse proportional to 1 by R. 1 by R तो नहीं possible होगा. 1 by R is directly proportional कब होगा? जब हमारे पास चार्ज डेंसिटी कुछ फॉर्म में होगी, लाइक 1 by R फॉर्म में होगी, तो डिक्रीज हो सकता है. या तो डायरेक्टली है तो चार्जेस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो दिस वन इज करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट. यही भी क्वेश्चन हमने कल ही देखा था. मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम द आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल. आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल कल ही मैंने चार्ट लिख के दिया था कि पोटेंशियल V, okay, for mono directly proportional to 1 by R, E is directly proportional to 1 by R square. Okay, V die directly proportional to 1 by R square, E is directly proportional to 1 upon R to the power 3. V quadro is directly proportional to R to the power 3, E is directly proportional to R to the power 4. उन्होंने क्या पूछा अभी? मतलब मैंने कल बताया था कि जनरली दे आस्क ऑन potential, but here they ask on electric field. The magnitude of electric field at a large distance r from the ideal dipole. Dipole electric field. Dipole electric field directly proportional to 1 by r to the power 3. Means E is directly proportional to r to the power minus 3. That's it. कल का सेशन जिन्होंने देखा उनको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा r to the power minus 3. Okay. Yes. Next. ये भी हम सॉल्व करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2. ओके, J is current density and rho is the electric charge density. This equation del bar dot Z bar plus del bar upon del bar T is known as the equation of continuity. This is equation of continuity or continuity equations. Means option number B is correct. This is a straightforward questions. Equation of continuity. Next. ये भी क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड ही है. This is also very simple questions. ये देखिए, here मान के चलिए here support is not rigid. Support is not rigid starting from x1. Starting from x1 मतलब ये जो पार्टिकल है उस डायरेक्शन से क्या होगा? डिस्प्लेस होगा. ओके, सेकंड पार्टिकल आल्सो डिस्प्लेस अलोंग द डायरेक्शन एंड थर्ड पार्टिकल आल्सो डिस्प्लेस अलोंग द डायरेक्शन. Here support is not rigid. Take the x1 for starting. मतलब what is the displacement? x1 displacement. What is the x2 displacement? This one. What is the third particle displacement? x3. Okay. And how to find out the potential? Simply V is equal to 1/2 K elongation और compressions लेते हैं हम. तो here x2 minus x1 bracket square, x1 minus x2 bracket square plus इसका elongation कितना रहेगा? 1/2 K x3 minus x2 bracket square. Yes or no? Final minus initial one. तो देखिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल. तो टेक द स्क्वायरिंग ऑफ दिस वन. 1/2 के टेक कॉमन आउट बिकॉज हर एक दोनों भी स्प्रिंग के लिए के तो सेम ही वैल्यू है. अरे समझ में? हियर डोंट टेक द के और के प्राइम्स लाइक दैट. तो व्हाट इज दिस स्क्वायर? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर. हमारे पास जो 2 टाइम्स x1 x2 लिखते हैं हम a plus b सपोज ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हम दे आर लाइक दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab. ये जो ab 2 टाइम्स ab जो आता है तो कैसे आता है? ab plus ba आता है. अरे समझ में? ab plus ba. दिस इज नॉट लाइक द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन डिपेंड. दिस स्केलर क्वांटिटी. मतलब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं. ab plus b इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ ab. अरे समझ में?
But here don't write down the 2 times, always memorize. Here write down this ab plus ba. Clear? So means this is like that, x1 x2 minus x2 x1. जब भी हम स्मॉल ऑसिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी याद रखेंगे, वी कैन राइट डाउन दैट like that x1 x2 x2 x1. Clear? Plus similarly here also x2 square plus x3 square minus x2 x3 minus x3 x2. अभी हमें मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है, तो मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम? पोटेंशियल की 1/2 k इज कांस्टेंट, तो बाहर निकालेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि k इज देयर, तो k को हम नहीं बाहर निकालेंगे, k को अंदर ही रखेंगे. तो 1/2 we can take common out because this is common for all the system. All the system मतलब kinetic energy और potential energy में, इसलिए we can take the 1/2 k is common out. 1/2 only take common out. K don't take common out because your kinetic energy is how much? 1/2, 1/2 m x dot square plus x2 dot square plus x3 dot square, like that. At that time this 1/2 and this 1/2 take common out because we can write down the secular equation. What is the secular equation? Omega square t is equal to 0. इस टाइम हम 1/2 कॉमन ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी बिकॉज दिस इज गोइंग टू द राइट साइड्स. क्लियर? तो x1 x2 x3 लिखिए, x1 x2 x3. हियर आल्सो वी कैन राइट डाउन द x1 x2 x3. हियर मल्टीप्लिकेशन करिए, x1 x1, x1 x1 कितना होगा? x1 स्क्वायर. तो x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है. 1 मींस k है, तो राइट डाउन k इज हियर. नेक्स्ट x1 x2, x1 x2 coefficient is 1/2 k, but on 1/2 already we can take common out, means coefficient of x1 x2 is minus k. Next x1 into x3, x1 into x3 कोई coefficient है यहाँ? नहीं है, तो write down the 0. Next x2 x1, x2 into x1, x2 into x1 any coefficient is there? Yes, x2 into x1 coefficient is k, but this is minus k. Clear? Next x2 into x2, x2 into x2, x2 square. What is the coefficient of x2 square? K. But here we are getting the 2 times of x2. This is first time of x2 square and second is this one. Means we are getting the 2 times of x2. 2 times of x2. इसलिए we can write down the 2 times of k. Always memorize 2 times of k. Next x2 x3, x2 x3. What is the coefficient of x2 x3? x2 x3 coefficient is minus k. Okay. Next x3 x1, x3 x1 का कोएफिशिएंट दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा है. ओके, मतलब दिस कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट x3 x2, x3 x2 है इसमें? यस, x3 x2 इज देयर. व्हाट इज द कोएफिशिएंट? ये तो -1 दिख रहा है, बट -1 into k is nothing but minus k. Next x3 x3, x3 square. And what is the x3 square coefficient? x3 square coefficient is 1. 1 into k is nothing but k. डायरेक्ट हम इसके मैट्रिक्स लिखेंगे. व्हाट इज दिस मैट्रिक्स? k minus k 0. नेक्स्ट minus k 2k 0, sorry minus k. नेक्स्ट 0 minus k k. Means which of the following option is correct? ये हो गया पोटेंशियल का मैट्रिक्स. है काइनेटिक एनर्जी का भी लिख सकते हैं, बस उन्होंने पोटेंशियल का दिया है इसलिए वी कैन राइट डाउन द पोटेंशियल. देखिए k minus k और 1/2 भी लिखा होगा तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं. Otherwise no need to write down this one because this is going in the okay. K minus k 0, k minus k 0. Next minus k 2k minus k. Second row. Third row 0 minus k or plus k. This is a very simple one. Next अब लैग्रेंजियन का भी देखेंगे हम थोड़ा.
Next, this reactions. Write down the reactions. What is this reaction? Pi plus reactions. Yes. Pi plus neutron. Pi plus neutron arrow. Pi 0 K0. Pi 0 plus K plus K plus. Okay. तो अब चार्ज देखिए K प्लस Q लेफ्ट साइड में प्लस वन, न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है जीरो, राइट साइड पाई जीरो चार्ज जीरो, K प्लस चार्ज मतलब Q इज कॉन्जर्व। नेक्स्ट बेरियन नंबर चेक करिए, तो बेरियन नंबर पाई जीरो इज नॉट अ मेसॉन पार्ट, सॉरी बेरियन पार्टिकल, तो दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन इज अ बेरियन पार्टिकल प्लस वन, पाई जीरो इज नॉट अ बेरियन पार्टिकल जीरो, K plus also not a baryon particles, means this is equal to 0, means baryon number is not conserved. Next, QBL, lepton number is conserved, no any lepton particle is there, QBL 0 conserved. Next, I, pion group में कितने particles होते हैं, 3 particles होते हैं, तो I value 1, न्यूट्रॉन ग्रुप में कितने particles होते हैं, 2, तो 1/2, पाइजियल में कितने particles होते हैं, 3, तो 1, K1 ग्रुप में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1/2, और 2 पार्टिकल्स होते हैं, तो I वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच 1, तो I इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट I3 पाई प्लस के लिए प्लस 1, न्यूट्रॉन के लिए -1/2, पाई जीरो के लिए 0, K प्लस के लिए +1/2, मींस I3 आल्सो कंजर्व्ड, +1/2 -1/2 कंजर्व्ड। नेक्स्ट चेक द S वैल्यू 0 +0, pi 0 also not a strange particle 0, but K plus is a strange particle +1। अब चेक करें इसमें कौन सा कंजर्व्ड है कौन सा नहीं कंजर्व्ड है। Q B S are conserved but I3 is not conserved। I3 देखिए तो I3 हमारा कंजर्व्ड हो रहा है, +1 and -1/2 is equal to +1/2, तो ऑप्शन नंबर 1 is not correct। नेक्स्ट Q B is conserved but ES and I3 is not conserved। Q and B is conserved but B is not conserved here। I3 and ES is not, ES तो not conserved but QB is not conserved। Next, B, S, I3 are conserved but Q is not conserved, तो Q तो conserved ही है। Q and I3 is conserved but B and ES is not conserved। ऑप्शन नंबर C देखिए, Q and I3 is not conserved। Q and I3 is conserved। Q conserved, yes। I3 also conserved, देखिए +1/2 +1 -1/2 +half conserved, yes, means Q and I3 is conserved but yes and I3 is not conserved, but yes B and S are not conserved, but B and S are not conserved, yes, B is not conserved because here left side charge is 1, right side is 0, and yes left side is equal to 0, right side is equal to 1, मतलब this is not conserved, this one also not conserved, means the B and S are not conserved। Q and I3 is conserved, means which option is correct? Option number C is correct, clear? Next, which of the following statement is true for trace? Which of the following statement is true for trace? मान के चलिए कि सपोज हमारे पास ABCD is any random matrix, okay, ABCD is any random matrix, then trace of ABCD is equal to क्या होता है, trace of B C D A is equal to trace of C D A B is equal to trace of D A B C, मतलब ये प्रॉपर्टी उन्होंने सेटिस्फाई करनी चाहिए, अरे समझ में, मतलब हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यस और नो, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, A B C D मतलब नेक्स्ट B C D, whatever trace of this matrix we are getting the same trace of this matrix, same trace of this matrix, yes or no। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन चेक करिए, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन, ट्रेस ऑफ AB is equal to trace of BA, trace of AB is equal to trace of BA, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यस, बिकॉज वी नो दैट ABCD is equal to BCD, बस एक ऑर्डर जो है तो प्रॉपर्ली उन्होंने इंटरचेंज कर दिया। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कर दिया,
ABC BAC, ABC is equal to BAC, ट्रेस BAC। ये ऑर्डर में है क्या? नहीं ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि ABC है तो हम ऐसे लिख सकते थे BCA, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब दिस वन इज नॉट करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ ABCD इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BACD, मतलब उन्होंने बस वो दो ही कंपोनेंट चेंज कर दिए। कौन से? ABCD एज इट इज रख दिया, मतलब दिस वन इज आल्सो नॉट अलाउड। नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A इनटू ट्रेस ऑफ B, ऐसे होता नहीं है। तो जनरल प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि ट्रेस ऑफ ABCD इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BCDA, ट्रेस ऑफ CDBA, ट्रेस ऑफ DABC। ये सीक्वेंस के हिसाब से ट्रेस जो है वो इक्वल होता है। आ रहा है समझ में? मतलब which of the following option is correct? Trace of AB is equal to trace of BA. Remaining all are not correct. Next, and we know that Laplace transform of f of s, f of x is equal to 1, 0 is less than x is less than infinity, 0 to infinity. तो Laplace of f of t is equal to क्या होता है? Laplace of f of t, Laplace of f of t is equal to f of s is equal to 0 to infinity f of t into e to the power minus st dt. Yes or no? Now here, what is the value of f of t? F of t means f of x. Now here, f of x जब लेंगे हम, तो we can write down the f of x is equal to Laplace of f of x is equal to f of s is equal to 0 to infinity f of x into e to the power minus sx into dx, sx into dx. Clear? Now what is the value of f of x here? What is the value of f of x? F of x is equal to 1. Just to substitute here 1. Then Laplace of 1 is equal to 0 to infinity 1 e to the power minus st dt. E to the power minus st dt is e to the power minus st upon minus s limit 0 to infinity. Okay, minus 1 by s common निकालिए, we can substitute the higher limit e to the power minus infinity minus e to the power 0. E to the power minus infinity is 0 and e to the power 0 is plus 1. Minus into minus become plus, means Laplace of 1 is equal to 1 by s. Option number A is correct. Next, the value of z into x exponential e to the power 1 by z. Okay, integration z into e to the power 1 by z into dz. मतलब what is the value of f of z here? F of z is equal to z into e to the power 1 by z. उन्होंने रेसिड्यू बोला है इसका। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 2 pi I into summation over ri. Summation over ri means residues. Okay, तो z into e to the power 1 by z. तो इसे कैसे स्प्लिट करेंगे? 1 by z can be written as e to the power x is equal to how much? क्या सीरीज क्या होती है? e to the power x is equal to 1 plus x square upon 2 factorial plus so on. Yes or no? But here x is replaced by 1 by z. So e to the power x is 1 plus x. X means 1 by z. X square means 1 upon z square into 2 factorial plus 1 upon 3 factorial into z to the power 3 plus and so on. Okay? तो z को अंदर मल्टीप्लाई करिए, z को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस बिकम z plus 1 upon 2 factorial into z plus 1 upon 3 factorial into z square plus and so on. ऐसे ही हमारे पास essential singularity हो. Essential singularity means PP contain infinite number of terms. Infinite number of terms हो रहे हैं तो तब how to find out the residue? At that time we can take the coefficient of 1 by z. Coefficient of 1 by z is nothing but residue. मतलब coefficient of 1 by z, here is the z square, here is z cube, ऐसे आ रहा है, बस 1 by z coefficient is nothing but 1 upon 2 factorial. मतलब residue for this case is equal to how much? 1 upon 2 factorial. Clear? Now just substitute this value here. Then this is equal to how much? 2 pi I into residue of summation. तो एक ही है, no need to write down the summation. 1 upon 2 factorial. 2 factorial means 2. 2 to get cancel.
2 get cancel. Answer. 2 get cancel. We getting answer is equal to how much? Simply pi. Option number which one is correct? Option number A is correct. Z into e to the power 1 by z is equal to how much? 1 by 2i. Next. Which of the consider the vectors a bar, b bar, and c bar. Which of the following statement is true? Linearly dependent, linearly independent. Zero non-zero आना चाहिए. Okay. So write down this values here. Take the determinant. First one. First one is 1 5 1 1 5 1. Okay. Next 1 5 minus 1 minus 5 1. Next one 1 0 1 1 0 1. उसका डिटरमिनेंट निकालिए. तो डिटरमिनेंट क्या है? 1 minus 5. ओके. minus 5 1 minus 1 0. Okay, minus 5 1 minus 1 0 plus 1 plus 1 तो 0 minus minus plus 5. Okay, 0 minus minus और minus 5. Okay, तो plus 1 into minus 5 is minus 5. Second वाला तो 0 हो गया and third one is minus into minus plus 5. This is equal to 0 linearly dependence. Okay, is equal to 0 linearly dependent, is not equal to not linearly independent बोलते हैं. है समझ में? मतलब this determinant is equal to 0 है तो linearly dependent. This is not equal to 0, not means independent, linearly independent. 0 linearly dependent. So which option is correct? This determinant is equal to 0, मतलब ABC are linearly dependent. Okay. Next. Which of the following equations represent the conservative force? Which of the following equation represent the conservative force? तो conservative force मतलब क्या होता है? Conservative force में always memorize equation जो होता है F is equal to negative gradient of scalar function. Negative gradient of scalar function. इसका मतलब क्या है? Any system is conservative. Curl of f bar is equal to 0. मतलब f bar is equal to negative gradient of scalar function. Means curl of f bar or curl of this quantity is equal to 0. Then we can say this is a conservative. तो curl of f bar check करिए. Which component use? The del bar cross f bar is equal to 0. I, j, k. Next, dava upon dava x, dava upon dava y, dava upon dava z. और f की वैल्यू लिखिए. तो ये अब देखेंगे, मान के चलिए कि हमने 16 लिखेंगे और तो वो मान के चले हमने थर्ड वाला ले लिया. तो थर्ड ऑप्शन में देखें तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट 2xz, नेक्स्ट 2xz, 2xz. हमें बस ये 0 चाहिए. जो भी कंपोनेंट 0 देगा दिस विल बी आंसर. ओके, तो I dava upon dava y how much? 0. Dava upon dava z 0 because ये कंपोनेंट है ही नहीं. माइनस j yes. dava upon dava x क्या आ रहा है? 2z. dava upon dava x 2z. नेक्स्ट dava upon dava z minus 2z. सॉरी minus 2z नहीं तो plus 2z आएगा नहीं क्या? As minus minus become plus 2z. Next, k cap. Dava upon dava x, this become 2x. Next, dava upon dava y minus x. मतलब this is not equal to 0. This is not equal to 0. मतलब option number C is not correct. Option number C is not correct. Now we can choose suppose option number जेड स्क्वायर. तो थोड़ा सा ट्राई लेकर यहाँ भी देखिए, यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. तो इधर प्रॉब्लम कहाँ गया हमें? तो 2x मतलब यहाँ 2x आना चाहिए था और यहाँ जो है तो माइनस 2z आना चाहिए था, तभी वो 0 बन सकता था. यस सर. तो कौन सा ऑप्शन 2x 0 0 देगा? आप देखिए. तो बी चेक करिए. अभी यहाँ थोड़ा सा बी वाला देखिए.
तो 2xy प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस जेड स्क्वायर, मतलब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, 2xy प्लस जेड स्क्वायर, बी ऑप्शन 2xy प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस जेड स्क्वायर, 2xy प्लस जेड स्क्वायर, नेक्स्ट 2xy प्लस जेड स्क्वायर, नेक्स्ट x स्क्वायर y, x square y, sorry, x square, and third one is a 2xz, third one 2xz. अब चेक करिए, देखिए आई y कंपोनेंट है नहीं जीरो, x कंपोनेंट है नहीं, z कंपोनेंट है नहीं जीरो, ओके, मतलब जीरो माइनस जे, ओके, माइनस जे, नेक्स्ट j में डब अपॉन डब x, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, सॉरी 2z, इसका डेरिवेटिव 2z, डब अपॉन डब x बनेगा 1, रिमेनिंग इज 2z, नेक्स्ट डब अपॉन डबल z, ओके, फर्स्ट पार्ट जीरो, z स्क्वायर डेरिवेटिव इज माइनस 2z प्लस k क्या, अब देखिए x स्क्वायर डेरिवेटिव इज हाउ मच 2x, और डबल अपॉन डबल y 2xy प्लस z स्क्वायर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0, 2xy डेरिवेटिव इज 2x minus 2x plus 2x minus 2x get cancel, plus 2z minus 2z get cancel, ऐसा del bar cross a bar is equal to 0, मतलब ये पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्ल ऑफ a bar is equal to 0, मतलब this quantity is conservable, okay. Now means which of the following option correct, option number B is correct one. स्ट्रेट फॉरवर्ड में और कोई कौन सा क्वेश्चन बाकी है, देयर गिवन द डायरेक्ट आंसर्स, वो जो क्वेश्चंस हैं हमें डायरेक्ट सॉल्व करने पड़ेंगे इसको, और x स्क्वायर और कोई क्वेश्चन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हैं, इट्स ओके, और z प्लस z बार वो भी हमें एनालिटिक है कि नहीं वो भी से करने के लिए टोटल सॉल्व करना पड़ेगा, the nuclear cell model orbit field is okay, 1 is 1 by 2, 1 by 3 by 2, okay, 3 by 2, this is splitting between 2 p 3 by 2 and p1 by 2, without solving, yes. ये करेंगे, the Maxwell distribution holds for the MB जो स्टैटिस्टिक्स होता है, तो MB स्टैटिस्टिक डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल के लिए होता है, B स्टैटिस्टिक जो होता है बोसॉन के लिए होता है, और MB स्टैटिस्टिक जो होता है वो फर्मी पार्टिकल के लिए होता है, ओके, ऐसा ना बोसॉन पार्टिकल, B स्टैटिस्टिक, फर्मियन पार्टिकल, FD स्टैटिस्टिक एंड डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल, MB statistics holds for distinguishable particle और indistinguishable तो हम नहीं, particle with a spin integral, हाफ इंटीग्रल मतलब बर्नौली हो गए, इंटीग्रल स्पिन बोसॉन के लिए हो गए, अरे समझ में, मतलब डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ऑल आर इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल, इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल हो तो एक तो बी स्टैटिस्टिक्स रहेगा या एफडी स्टैटिस्टिक्स रहेगा, नेक्स्ट पार्टिकल विद हाफ इंटीग्रल स्पिन, हाफ इंटीग्रल विद फर्मियंस, मतलब वो गया एफडी स्टैटिस्टिक्स,
पार्टिकल विद इंटीग्रल स्पिन मतलब वो है बोसॉन स्पिन, बोसॉनिक पार्टिकल्स, ओके। मतलब दिस ऑल थ्री स्टेटमेंट इज लाइक दैट B and FD statistics, only one statement for MD statistics, clear? वो तो देखा है हमने, ओके। CP अपॉन CP अभी देखना पड़ेगा, जस्ट थोड़ा ये क्वांटम का तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म। ये भी थोड़ा सा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देखेंगे सॉल्व करके। क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, नेक्स्ट सेशंस। आगे वाले सेशन में बाकी वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे, 3-4 सेशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। दिस इज ऑल क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बिट क्वेश्चंस। अभी थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा वन बाय वन क्वेश्चंस के लिए, ओके। बाकी वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशंस में। जितने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बिट क्वेश्चंस थे वही अभी हमने सॉल्व कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट सेशंस।